Yes, students. Today we will discuss about lathe, and in these different types of lathe, one is tur one is turret and capstan lathe. Yes, students. स्क्रीन शेयर्ड है, आपको दिखाई दे रही है? यस सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये अभी ज्वाइन 9:05 हो गए हैं। ओके, turret and capstan lathe. This turret and capstan lathe it is generally high production machine tool. High production machine tool, or in this turret and capstan lathe, we improve basically different types of areas in terms of one is multiple tool availability. Multiple tool availability, it means in case of engine lathe, a simple lathe, in this engine lathe only single cutting tool can be used. But in case of turret and capstan lathe, at a one time multiple tool can be used. So it is high production machine. Number two, work holding methods. Work holding method is also there, which can hold multiple tool. Third is automatic feeding of the tool. Automatic feeding of the tool. So at a one time multiple tool can work on the workpiece. It is possible due to automatic feeding of the tool, which is attached to work holding. Fourth is automatic stopping of tools at precise location. Automatic stopping of the tool at precise location. Next one is automatic control of proper sequence of operations. Automatic control of proper sequence of operation. So in this case, we can say easily when the tool work on the workpiece. So different types of operations are possible on the lathe machine. These different types of operations can be possible or in different sequence. This is only possible due to automatic control. Automatic control, automatic feeding of the tool, and so it is possible multiple tool availability. So this is the improvement as compared to engine lathe. Now it has hexagonal turret upon which are bolted various tool holders. Hexagonal turret, various holders are there, and it can hold a number of cutting tools at a time. It can hold number of cutting tools at a one time. It is already said told in this. Next point, tools may be permanently set up in the turret. Tools may be permanently set up in the turret in the sequence in which needs be used. जैसी अपनी को आवश्यकता है वैसे ये टूल्स यहाँ पर परमानेंटली अटैच्ड हो जाएंगे. एंड कंबाइन कट पॉसिबल, कंबाइन कट भी पॉसिबल है, एक टाइम में कई कट हो जाएंगे. एंड नेक्स्ट वन इज लेस मशीनिंग टाइम. मशीनिंग टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा जब एक टाइम में कंबाइन कट इज देयर, ऑटोमेटिक फीडिंग होगी. एंड लेबर कॉस्ट इज आल्सो लो. लेबर कॉस्ट इज आल्सो लो. तो इसका डिसएडवांटेजेस क्या हुआ? एनी स्टूडेंट्स कैन टेल व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? किस टर्म में हम डिसएडवांटेजेस देख रहे हैं कैप्स्टन एंड टैरेट लेथ? तो इट्स मीन डिसएडवांटेजेस ये कह सकते हैं आप ओवरहेड चार्जेस हायर बिकॉज हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, more power consumption, and high maintenance cost. High maintenance cost, more power consumptions, high initial investment. This is the now turret and capstan lathe different from the center lathe. Turret and capstan lathe different from the center lathe.
It's already understood with these points, these turret and capstan lathe different from engine lathe. So in another term, turret and capstan lathe differ from center lathe. One is headstock, has more and heavier range of speeds. Headstock has more and heavier range of speeds, due to which higher production rate. Higher production rate. Second one is tool post is indexable. Tool post is indexable. Mean यहाँ multiple tool is possible. In this case, turret and capstan lathe. So tool post is indexable. Third one is tailstock is replaced by tool turret with 6 tool position. जो इंजन लेथ है वहां जो टेल स्टोक होगा, टेल स्टोक इज मूवेबल, हेड स्टोक इज फिक्स्ड. या स्टूडेंट सभी को पता है ना, टेल स्टोक मूवेबल है जो कि अपने राइट हैंड साइड पे होता है, और वो इट इज रिप्लेस्ड बाय टूल टरेट विथ 6 टूल पोजीशन, जहां पर अपना टूल लगा होता है, और जो हेड स्टोक है वहां पर अपना वर्क पीस. सो नेक्स्ट वन इज feed of each tool can be regulated. Feed of the each tool can be regulated because it is automatic. Automatic feeding of the tool. Clear? Now, main parts of a turret और कैप्स्टन lathe. इसके जो मेन पार्ट्स हैं, पार्ट्स तो सब में लगभग सेम ही होते हैं. तो हेड स्टॉक, चेज सैडल, टरेट सैडल, बेड एंड लेग्स. इसमें टरेट आ गया, उसमें टेल स्टॉक आ गया, पार्ट्स तो वही होंगे. टरेट turret lathe is a machine generally larger than a capstan lathe. Now differences between the turret and capstan lathe. Turret and capstan lathe. Turret lathe is machine generally larger than capstan lathe, but using similar tools. Main difference between them is that the turret saddle has longitudinal movement on the guide of the bed. On a capstan lathe, turret saddle is clamped to the bed. Clamped to the bed. Other differences between the turret and capstan lathe. One is if we take the point feeding of the tool, then in case of turret lathe, saddle is moved. In case of capstan lathe, saddle is fixed. Now, on the basis of turret position, in case of turret lathe, turret is mounted directly on the saddle. In case of capstan lathe, turret is mounted on an auxiliary slide. When we take the case of rigidity, then turret lathe very high rigidity. Capstan lathe tool support is subjected to bending and deflection, so resulting in vibration. When we take the capability, then turret lathe heavy job and capstan lathe lighter jobs. When we take the point of size, in case of turret lathe up to 200 millimeter dia, in case of capstan up to 60 millimeter dia. In case of tool travel, in case of turret lathe full length of the bed, and in case of capstan lathe limited tool travel. And tool feeding in case of turret lathe it is slower, and in case of capstan it is faster. Now, types of turret lathe. Horizontal turret lathe, one is ram type, other is saddle type. Ram type and saddle type. In case of ram type turret lathe, the turret is mounted
turret is replaced on a slide or ram which moves back and forth on a saddle. Clamped to the bed. Clamped to the bed. And in saddle type turretlet, turret is mounted directly on a saddle. Turret is mounted directly on a saddle that moves back and forth with the turret. That moves back and forth with the turret. Now, automatic screw machine. Automatic screw machine. A controlling movement for the turret so that tools can be fed into the work. Tools can be fed into the work at the desired speed, withdrawn and indexed to the next position. Automatic screw machine. It is already, all points are mostly automated. Controlling movement for the turret so that tool can be fed into the workpiece, that is job, at the desired speed and withdrawn and indexed to the next position, means next tool occurred for the next operation. Second one is, it also cam controlled, is a mechanism for clamping the work in the collet. Clamping the work in the collet. Second is single spindle automatic screw machine. Single spindle automatic screw machine. This machine has a cross slide capable of carrying tools. This machine has a cross slide capable of carrying tools, both front and rear, and a turret mounted in a vertical position on a slide with longitudinal movement. Longitudinal movement. Now, the tool used in the machine are mounted around the turret. Tools used in the machine are mounted around the turret in a vertical plane. In a vertical plane, so you can see it is a line diagram. In this, different types of operations are there, such as turning, drilling, boring, and threading. So this is top tool slide, spindle and workpiece, ram or turret, hexagonal, side tool slides. So in this multi-spindle automatic screw machine, in this machine, large number of spindle that is 4, 6, yeah 8 are provided. These spindles are carried in a rotatable drum that is indexed in order to bring each spindle successively into a different working position. Next one is Swiss automatic screw machine. Swiss automatic screw machine. This machine has been developed for precision turning of small parts. The single point tools used on this machine are placed radially around the carbon line guide bushing, through which the stock is advanced during machining operation. Most diameter turning is done by the two horizontal slides, whereas the other three are used principally for knurling and chamfering. For knurling and chamfering. Yes, students, any queries regarding this? Sir, query तो नहीं but एक request है. हाँ जी, please. Sir, can you share this sir scan with us right now? Sir, आप end में share करते हो sir, end में इतनी सारी files एक साथ पढ़ी नहीं जाती.
आप एक तो एक एक करके भेजते रहिए सर ऐसे प्लीज। अच्छा, लेक्चर वाइज भेजता रहा हूँ। यस सर। हाँ, लेक्चर वाइज आपको मैंने आप हाँ व्हाट्सएप पे कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं आपको? नो सर, व्हाट्सएप पे कर दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पर आपको डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और बताओ कुछ क्वेरीज आपकी इसके अलावा? आपको ऑफलाइन वगैरह स्टार्ट होने की उम्मीद है? आपको कुछ पता किया हो आपने? सर यहीं पूछने के लिए सर आपसे मतलब कुछ आइडिया लगा है क्या सर आपको? डियर स्टूडेंट्स, हम तो चाहते हैं कि आप ऑफलाइन आओ, क्लास में एक फिजिकल इंटरेक्शन हो, तो हमें भी अच्छा लगेगा। हर बच्चे की क्वेरीज क्या होता है कि सामने अगर हम मिलते हैं ना तो पता भी लगता है, अदरवाइज कई बार मन में क्वेश्चन भी आ जाए ना, ऑनलाइन में ना वो चीज़ नहीं बनती और हम कई बार क्वेश्चन पूछते पूछते रह भी जाते हैं। ये जनरली आपके साथ ना सभी के साथ ही होता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में बड़ा फर्क है। ऑफलाइन में तो हम प्रैक्टिकली भी अपनी वर्कशॉप वगैरह में विजिट कर लेंगे। अब देखो, अपनी वर्कशॉप में ना लेथ मशीन्स रखी हैं, इंजन लेथ रखी हैं, वहाँ टैरेट और कैप्स्टन लेथ नहीं है। बट अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो हम इंडस्ट्री विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर टैरेट और कैप्स्टन लेथ अवेलेबल होती है ना। वहाँ डिफरेंट टाइप्स की मशीन भी देख सकते हैं। अब ना तो इंडस्ट्रियल विजिट भी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है ना, तो ऐसी चीजें की कमी तो होती है। कोशिश आप भी करो, हम तो अपनी तरफ से चाहते ही हैं कि ऑफलाइन हो जाए तो बेटर है। सर हम क्या करें? आप अपने सर सब तो चाह ही रहा है सर, तो फिर ऑफलाइन हो क्यों नहीं रहा? हाँ, ये यही यही चीज तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने कभी अपनी जो रिक्वेस्ट है क्या फिजिकली डाली है? नहीं डाली ना। सर सर बहुत बार मेल मेल भेज की चुके है हैं सर, सर। मेल सर 4-5 पर भेज चुके हैं। किन और को? सर हम काफी बार व्हाट्सएप पे भी कन्वे कर चुके हैं टीचर्स को, पर हमें कोई नहीं रिप्लाई नहीं, बैक आता नहीं है। मैं आपको रास्ता वही तो पूछ रहा हूँ ना, आपने मेल सर किन को डायरेक्टर किया ऑफ आपने? यूआईटी को सर। आप सर एक डायरेक्टर को, वाइस चांसलर को और को सर, डायरेक्टर को डीयूआई ऑफिस ऑफिस जो है उसको। हाँ, उनको किन्होंने किए मेल? डायरेक्टर, डीवाई या वीसी? सर मैंने सर आप मैंने। बताओ ना, नाम तो बोलो जरा जिन्होंने किया है। देवांश, रोल नंबर 25। सर क्या? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध? यस सर। आपने की कब की थी मेल वाइस चांसलर ऑफिस? सर पिछले सेमेस्टर में 2 बार की है और इस बार नहीं नहीं, 1 बार पिछले की है। सेमेस्टर के बाद तो कोरोना की लहर ऐसी आ गई थी ना, तब बंद हो गया था। अब उसके बाद किन ने की है, जब ये सब कुछ ओपन हो गया है पिछले 15 दिन से? सर इस सेम में सर अभी जब सेम शुरू हुआ सर उससे हम 1 तो या अभी 2 दिन तेरह पहले की। 10 तारीख को शुरू हुआ, 10 फरवरी को। सर बस उससे 1-2 दिन पहले ही है सर। की है किन को? वाइस चांसलर सर को की है? सर वाइस चांसलर सर को, डीवाई सर डिपार्टमेंट को और डायरेक्टर सर को। आपने लिख दिया उसमें ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ लिखा है या एक पर्सनल मेल डाल दी? सर वो काफी बड़ा सर लिखा है सर, उसमें सारा कुछ मेंशन किया था सर भी, ये वाला कॉलेज भी खुल गया और मतलब यहाँ पे भी मतलब सर प्रॉपर मतलब बताया सर क्या क्या आपने मतलब। कुछ नहीं, आप सिंपल लिखो कि we have no any objection, we have no any resistance if all classes will be handled conduct offline। बस सिंपल लिखो, दूसरों को एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है। एक दो लाइन में लिखो, ज्यादा लिखते हैं ना तो फिर वो ना कोई पढ़ता ज्यादा, ना ज्यादा कोई फिर केयर करेगा। आप एक दो लाइन लिखो ज्यादा, बस इसी में बहुत है ना, वो बेस्ट वे होता है। 2-3 लाइन का ही एक मेल कर दो बस, कोई अटैचमेंट करके करते हो वो, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल लाइन लिख के सेंड करो। इससे बहुत ज्यादा प्रेशराइज क्रिएट होता है और क्लासेस ऑफलाइन लगने की मैं मुझे तो लगता है कि मार्च में स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी ऑफलाइन, है ना, एज पर करंट सिचुएशन। सर पर अभी तक तो 4th ईयर का भी नोटिस नहीं आया और वो कह रहे थे पहले 4th ईयर को बुलाएंगे। नहीं नहीं, फोर्थ ईयर का आ चुका है। फोर्थ ईयर का नोटिस है। जितने भी फोर्थ फाइनल ईयर्स हैं, या यूजी हो या पीजी, अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, in both cases final years already got notice। अब वो क्या कहते हैं यार, क्या पता, कई बार ऐसा होता है ना, सपोज करो आप हो, आपको नहीं पता लगा हो, ये हो सकता है, बट वो डिपार्टमेंट की यस। तरफ से नोटिस जा चुका है, वो कन्वे नहीं हुआ होगा, ऐसा हो जाता है कई बार। ठीक। बाकी आप लोगों के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इनके बारे में तो नोटिस शायद नहीं आया। तो चलो, कोशिश की हो जाएगा, उससे पहले हमारी क्लास लगती रहे।
ठीक है, तो मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूँ और कल भी अपनी क्लास ऐसी ही होएगी। अटेंडेंस रोल नंबर जो अटेंड हो जाए, अटेंडेंस जिनके हो जाए वो जा सकते हैं। रोल नंबर 1, 2, 3, रोल नंबर 2, 3, 4, 5, प्रेजेंट सर। रोल रोल नंबर नंबर 4 प्रेजेंट 4। रोल नंबर 4, 5, 6, Present, 7, sir. So roll number 6. रोल नंबर 6, 7, 8, Yes, sir. ओके, 9, ओके, 10, Present, sir. 9, ओके, 10, 11, 12, ओके, प्रेजेंट सर। 13, 14, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 13, ओके, 14, 15, ओके, 16, 17, अवधेश, ओके, 18, Yes, sir. ओके, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Sir, 25. just 25, okay, 26, 27, 27 present, sir. 28, Yes. 29, 30, 31, 32, 32 present, sir. 32 present, okay, 33, 34, 35, 36, Yes, sir. 36 present. okay, 37, 38, 39, So 40, 39 present. 39, Lavanya Pal, okay, Yes, sir. 40, Manish, Present, sir. 41, 42, Yes, 43, sir. Sir, 42 Mayank Singh present, sir. 42, अपना अपने नाम के आगे अपना रोल नंबर भी लिखो, ठीक है। ठीक है, सर. 43, ओके, यस सर। 44, 45, मोहित, Present, sir. 46, निखिल, नहीं 46 में मृदुल, मृदुल, 47, मुकेश, Yes, sir. 48, 49, 50, 51, निखिल, Present, sir. 51, Sir, 49 present, sir. 49, 49 present. नवीन, ओके, Yes. Sir, 47 present. 47 प्रेजेंट, फिफ्टी वन, 52, 51 present, sir. 51 present, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 प्रियंका, 58 present, sir. 59, 60, 61 राहुल, 51 present, sir. 62, 63, 64, Yes, sir. 63. 63 Yes, sir. राज, 64, 65 रजनीश, Present, sir. रवि, Yes, sir. Present, sir. 67 रवि, Present, sir. ओके, 67. 68 ऋषि, Present, sir. Present, sir. 69 रितिश, 70 ऋत्विक, Present, sir. 71 सचिन, 70 present. 72 सक्षम, 73
74, 75, Present, sir. 75, okay, 25 present, sir. okay. 76, Saurabh, okay. Present, sir. 77, Shivansh, Present, sir. okay. 78, 79, Present, sir. Shubham Agarwal, okay. Present, sir. 80, 81, 82, sir. 80 present. roll number 80, Shubham, okay. Yes, sir. Present. 81, 82, 83, Yes, sir. roll number 83, Saurabh, okay. 84, Present, sir. 84, Tanish, Yes, sir. okay. 85, 86,